Mr. Sunil Shetty, aka Thalaiva. कर देने वाले जिनका मकसद ये है कि बस थलाइवन को हराना है, उनको गिराना है। और हमारे साथ हमारे बीच यहाँ पर जॉइंट कमिश्नर ऑफ मुंबई पुलिस जयंत गावस्कर, प्लेड बाय विवेक ओबरॉय। चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, प्लेइंग जानवी सुरवे, सोनाली कुलकर्णी। लोग है, अभी से ही ट्रेंड हो रहा है विद द ट्रेलर, जो लोगों ने देखा कि मेरे फैमिली को टच नहीं करने का, एंड जो थलाइवन का मोटो है अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने का। सो आई वुड वांट टू इनवाइट योर फैमिली ऑन स्टेज। सबसे पहले थलाइवन सिस्टर शांति प्रिया। जो एडुकेटेड सेल्फ मेड मैन है, adopted and raised by Thalaivan, plays Mahesh Krishnan, Freddy Daruwala. Child of Thalaivan, जो educated, ambitious, strategic and ruthless like Thalaivan, जो थलाइवन के छोटे बेटे का किरदार निभा रहे हैं वीरभद्रा। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनवाइटिंग सिद्धार्थ मेनन। थलाइवन परिवार में जो सबसे अलग है, जो इस पूरे क्राइम का कभी हिस्सा बनना नहीं चाहती, बोलते हैं ना, अच्छा एप्पल इन द रॉटन बास्केट, भावना रॉय। सन इन लॉ जो उनके राइट हैंड है, रोहित पाठक, जो राजन का रोल प्ले कर रहे हैं। धारावी बैंक एमएक्स ओरिजिनल सीरीज 19 नवंबर से जो स्ट्रीम हो रही है, दिस इज द थलाइवन फैमिली। लेकिन और भी लोग इस कहानी से अनजाने में कहीं जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा समीक्षा भटनागर, जो इरावती का रोल प्ले कर रही है। पूरा सक्सेसफुल करना है जेसीपी जयंत गावस्कर को, तो उन्होंने एक हैंड पिक किया है शूटर, जो किरदार निभा रहे हैं जो रॉड्रिक्स, हितेश भोगराज। तो डेप्यूटी सीएम भी आएंगे, जिनके जो मेन दुश्मन सीएम साहिबाई है, एंड ही इज आल्सो वेरी पावर हंग्री। नागेश भोसले का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं घनश्याम मात्रे। बेटे को भी स्टेज पे बुलाना है। घनश्याम मात्रे के बेटे, जो विमेनाइजिंग सन एमएलए ऑफ धारावी अविनाश मात्रे का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं संतोष जुवेकर।
Thank you, everybody, for being here. Um, I am really, really hoping that what you saw, जो आपने अभी देखा, पहला एपिसोड आपको पसंद आया होगा. ये I would like to just talk about two things. It's always when you are creating shows for a platform, दो सवाल हमेशा आपके मन में आते हैं. पहला होता है कि why this show, and then it's about how the show. Um, why the show is very important from MX point of view. I can bore everybody here with we have 300 million monthly active users and state numbers which are pretty large. But I think what I will do is I'll put two data points which are important to understand कि हम धरावी जैसा शो क्यों बनाते हैं MX में, right? I think the 2 points are that we are probably the only app, I think probably the only Indian app, that has crossed 1 billion downloads, right? And that is a very, very large set of downloads on any app. We are in the esteemed company of Facebook, Instagram, YouTube. That is the level of reach that we've got with our audiences in about 58 countries, to be honest, right? Not only in India, but about 58 countries. I think that's the first data point to understand that how large is the reach of MX, right? And I think the second data point is in India, if you talk about video, right, we are only after YouTube. So we're literally number 2 after YouTube in terms of video consumption. That is the reason why we are what we internally at MX talk about. We are proudly mass. We are not a niche channel. We do not make niche stories. We are a very, very proud mass channel. And I think that why Dharavi, I think it's a universal story. It is not catering to a specific audience, 18 to 24, 24 to 35, male, female, SEC SEC B. It doesn't work like that for Dharavi, right? Dharavi is a universal story. I think everybody will relate to it. I think everybody will enjoy it. I hope you guys enjoyed the first episode for sure. And the why, right? It's the how. So the why I have explained, and how it's magical, right? I think every show that we produce, and we produce quite a few, we put it out on the platform. The how magic is actually here, right? It's just these guys who are just so clear about about what they give to the project, right? And that level of professionalism that comes on set. I just like to talk about the how at two levels, right? There's a very long list of cast and crew that I cannot remember or talk about. But I think that, there's a writer sitting here, Sarthak, जिसकी दिमाग से ये शुरुआत होती है हर चीज़ की, right? There's Sanika, there are just people who start imagining this world, right? And when it's on paper, the clearer it is on paper, right, it just becomes clearer on how to do this bit. Then comes the captain of the ship, of course, right, with Samit. He actually gives the vision to that story. We have some beautiful, beautiful people sitting here. Vijay Mishra is here, our DOP, who gives you this absolutely beautiful visuals to watch, right? And it's just a very, very crazy collective effort. I cannot thank the cast enough for the effort that they've actually put. I'm sure they'll detail it out to you as to what they are, who they are. And the beauty of it is that we've got two beautiful, beautiful cultures at loggerheads. Not only two families, not only two stories, but the entire Tamil culture, right, headed by Thalaivan here. And we've got Sid Menon, we've got Freddy, we've got Vamsi, we've got Shantipriyaji, we've got Bhavna. We've got everybody representing that culture. And by the way, if you look at all their surnames, they're largely South Indian. And I'm not kidding. And that brings the authenticity to the show, right? And then there is this whole authentic Mumbai culture, which is literally got by Vivek. I think he had a coach to get the Marathi right. Sir had a coach to get the Tamil right? In spite of being Anna, am I right, sir? And the effort that has been brought around, right? And there's Santosh here, there is,
Iravati here, there is, it just builds it together. So just these two worlds colliding with a vision here, with a writer here, and I think that's the how and that's the magic. Why is a lot to do with strategy, but how is the magic? And the magic is really, really, these artists here. Ma'am is Kulkarni here. She represents Maharashtrian correctly, I believe. But it's just that we've got these people who've given it their all, right? And I think that's what we at MX are really, really happy about. I think that's what the audience will see. I think that's what the audience will appreciate. And yeah, we're just now really, really looking for some blessings from the audience. That's really it. Because eventually, once it's out there, then it's about the audience and how they react. So thank you very much, guys. Thank you, thank you, thank you. Really appreciate all the hard work, appreciate all the effort. Thank you. थैंक यू सो मच चीफ कंटेंट ऑफिसर गौतम तलवार एमएक्स प्लेयर थैंक यू सो मच सर आपसे जानना चाहूंगा अबाउट दिस शो जब आप लिख रहे थे जब आपने सोचा कि ये करना है शो प्राइमरी कास्ट सबसे पहले सुनील सर और विवेक ओबरॉय कैसे कास्टिंग हुई सबकी Hello. Thank you for coming, guys. It means a lot. First of all, this is the man जिसके वजह से शो इधर है हम सब इधर हैं and thank you for this opportunity Gautam it means a lot Percy thank you so much Sarthak for writing this brilliant show Senika superb dialogues Vijay Mishra the painter thank you so much Wasik Khan वो आ नहीं पाया लेकिन I can say a lot today. It's like a very emotional thing because life has come a full circle actually. I never thought that my most ambitious work would take me back to Dharavi, where I used to play as a child, where my mother had her packaging units in Dharavi, right in the center of Dharavi, and to play with all those kids over there, जिनकी माँ मेरी mother को help करती थी in packaging. Many people don't know about this, but that was a lovely journey. And from there, every lane of Dharavi, and we used to play Chor Police. So coming all the way back to Dharavi Bank and doing this, I think so. इससे अच्छा, इससे खूबसूरत चीज कोई हो नहीं सकती. And this is thank you Sunil sir with all the mad intense sessions of readings which I did in Khandala with sir and then straight to Dubai with Vivek sir and then straight to this hotel the first time I met Sonali ma'am. So it's been a great journey and it is also the way they have performed in the show. I always feel that the next nomination, I think so, this entire cast is going to compete with each other only in the award show. That is how good they are. And it won't be possible without the team. Dharavi Bank, and Dharavi is a beautiful place. मतलब एक अलग emotion है मेरा धारावी के साथ because I live in Matunga, I have a lot of connect and Dharavi is so beautiful, Dharavi is so genuine, Dharavi is so honest, the people, the love, the passion they have and ऐसा कहते हैं कि मुंबई दो चीज़ों से चलती है एक तो यहाँ की local और दूसरी है धारावी. So this is what Dharavi is all about, this is what all the characters are. Shanti ma'am, thank you for being a part of the show. She's brilliant. Samiksha, you are superb. Freddy, तू बहुत पागल है यार. हाँ, तू superb है. संतोष, मेरा भाई है. संतोष बहुत कमाल है. हाँ, देखो कोई टच नहीं कर सकता ये फैक्ट है परफॉर्मेंस में. नागेश दादा, thank you so much for being a part of this film, for this show. Bhavna, thank you so much. I want to really thank all of you. Hitesh, Siddharth, Rohit sir. वाटकर काका थैंक यू सो मच एंड इनकी परफॉर्मेंस प्लीज आप लोग देखना फॉर द परफॉर्मेंस इट इज आई थिंक सो दे हैव गिवन दे आर अ लॉट टू द शो अ लॉट एंड शायद थोड़ा टाइम लूंगा लेकिन वो जरूरी है ये बात करना ये बताना कि कितना इन लोग ने कितना प्रोसेस किया है मतलब हम लोग ने कितनी बातें की हैं वो वैनिटी वैन हो या सेट हो या शूट के पहले हो या फोन पे हो बट राइट फ्रॉम सुनील सर विवेक सर सोनाली मैम एवरीबडी दे वर सो वेरी पैशनेट अबाउट द प्रोजेक्ट कि ये लाइन हम ऐसे बोलेंगे तो क्या होगा ये हम ऐसे बोलेंगे तो क्या होगा एंड दिस इज व्हाट द डिस्कशन वाज व्हाट आई लव्ड अबाउट कि दीज टू जेंटलमैन आज के जितने एक्टर हैं
प्लीज मतलब ये जो दो लोग करते हैं और इतने साल से करते आए हैं, आई थिंक सो ये बहुत ही सीखने वाली बात है. इतना डिसिप्लिन, इतना पैशन मैंने आज तक किसी एक्टर्स में नहीं देखा. एंड थैंक यू फॉर दैट. थैंक यू. मैं बहुत ज्यादा, आई एम अ वेरी लकी मैन. आई थिंक सो दैट दिस शो केम टू मी एंड इट इज बिकॉज ऑफ this man that the show came to me. Thank you. I hope you all like the show. And also, it is also about the city. Dharavi is a character, and Dharavi is a very important character in the show. You know, the underbelly, the Thalaivan side, the cop side. You know, we've gone into details of how a Tamilian would speak or unka culture. We have gone into detailings of how Gavaskar would speak, or you know उसकी wife कैसे बात करेगी, उसके घर में क्या चीजें होंगी, थलाइवन के घर में क्या चीजें होंगी. Sonali ma'am as a chief minister, you know वो how ruthless she can be, you know how calm she can be, but the eyes, how will they talk, and that Sonali came up with all of that. So guys, please watch the show. Thank you so much. Thank you. Lovely. Thank you so much. Sunil sir, can't believe it's debut again for you. Absolutely, and I believe I'm going back to school. Yeah. Because of the same reasons, but super excited, fingers crossed. And you know, through the entire conversation, there's only one thing that I've realized is कि लोग स्केल की नहीं बात कर रहे, लोग गाने की बात नहीं कर रहे, लोग आउटडोर की बात नहीं कर रहे, लोग खाने की बात नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ टेक्नीशियंस और टैलेंट की बात कर रहे. You know, which means it's a fact that each and every one has been involved in this completely, whether it's the cops or the robbers, or you know, whether it's the good side of the so-called world, and our Thalaivan's family. It's the family that makes it. It's the family that makes it. And the police are a big problem for us. You know, the police have been very difficult. And so also the chief minister. I thought she was on my side, and suddenly we both realized she's on our own side. You know, so she is what a politician is. But hats off. So to each one of you, MX, thanks for having us. You know, Gautam, probably this is one of the only times I have not bothered once we are done with the shoot, because you knew that at the helm of affairs there were people who cared about the product, and they only spoke about the product. He came once in a while, observed, but behind the scenes I know that, you know, that he's at the helm of affairs and doing it and watching it very closely. Percy, Sarthak, I mean, a genius when it comes to writing, layering of the script, explaining the character to you. You know, I thought I was alive the minute he narrated it to me. You know, when Ashima and the Z team came, and Sarthak was there, and Sarthak said, so we want you to play this, and he narrated it. Somewhere down the line, I got the confidence that, you know, after a break of so many years, that yes, I can go back to school. Probably I haven't forgotten my craft. You know, when you disappear, you believe that you've forgotten it, because the world allows you to believe that, you know, you don't have a success behind you. Your Fridays are difficult Fridays. Not everybody wants to cast you, and suddenly something so big comes and they say, you doubt yourself, and you say, really, you want to cast me for such a big character? Because for me, my dream has been, if it's films like these, I talk about Nayakan and I talk about Dayavan, you know, and my two heroes, Kamal sir and Vinod sir. So that sword on your head, that can I even deliver 10% of what they've delivered? If I can, that's a big burden then that they've put on our shoulder. And then the dialogues, I was super excited about the dialogues. यार ये किसने लिखा है? कमाल है यार ये लड़का, कमाल की चीज़ है. और एक छोटी सी बच्ची सिनिका ने ये dialogues लिखे हुए हैं. You know, and that's the खूबी. कहाँ हो आप? Stand up. That's her and the dialogues, and associate Dharavi with her. It's unbelievable. Whether it's my prosthetics, Renuka, you'd expect people to come from Hollywood to do the prosthetics for something like this. But there's this young girl, Anil Dada's daughter, who comes up to you, works with you for 3 hours and does that. It's the art, the team. Khan Saab ke saath jo 4 pillars the unke, wo bachchiyan. You know, the detailing that they've gone. The Dharavi, the team that executed, it was the local boys that executed a seamless shoot. मैंने अपनी जिंदगी में इतनी seamless shoot कभी की नहीं. प्यार बहुत था, लेकिन unruly नहीं थे. Disturbance कभी कुछ नहीं था.
आवाज जब हम सीन करते तो एक आवाज नहीं निकलती थी, लोग सिर्फ ये पूछे कुछ खाओगे, कुछ ये करोगे, घर में बैठोगे, ये करोगे. दैट वाज धारावी, जो दुनिया बाहर की दुनिया को लगती है कि कितनी केओस है यहाँ पर, लेकिन एक ऐसी दुनिया है जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्यार भरा हुआ है. Where festivals are celebrated like festivals, like India needs to be celebrating its festivals, which we've seen in this last 1 year. Diwali, Holi, Eid, everything has meant so much to us. Ganpati, they've been huge. Suddenly you feel you're back in India, and that's what Dharavi meant to me. And that's the beauty of the show. Each one has performed so beautifully. क्योंकि मेरे लिए अगर आप देखोगे तो every time I see Vivek perform and he says something or Sonali says something, I feel shit, I'm dangerous, yeah? I'm this crazy whacked out guy. And am I that bad? But then when I see my family and Dharavi react to me, I feel no, yaar, ye Masiha hai, you know, ye Robin Hood hai. And that is the power of performance. And I loved it. We are going through tough times as far as our movies go. We say we don't have an audience. But trust me, अगर आपके पास कंटेंट हो और इतने अच्छे एक्टर्स और टीम हो, आप गलत हो ही नहीं सकते. So, you know, to my own team, Kiran Dada, Naveen, Wacky, Sunny, all of them who've been through this with me, because I used to lose it pretty often क्योंकि 3 घंटे बैठना, मेकअप करना, and then Samit comes up and says, सर ये ना थोड़ा निकाल दो ना, वापस लगा दो. यानी समित तू खाने के बाद ही मेरे को बुलाएगा, फिर क्या करे आप करो ना. And he used to go off, you know. And to all the assistants, I mean, बहुत सारी कहानियां मेरे पास assistants के बारे में, बहुत सारी कहानियां हैं. अभी वो बोलने जाऊंगा तो बहुत तकलीफ होगी. But what a team. Vijay, I mean, genius at work, but not once did I ever realize कि वो shooting कर रहा था. He never disturbed you once. So मुझे अगर confidence है इस show में, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि जिन्होंने भी बात किया उन्होंने सिर्फ बात किया कंटेंट और टेक्निकल टीम की. सो व्हेन यू हैव अ ग्रेट टीम, fingers crossed, I hope it works. Thank you. Absolutely, absolutely. Vivek sir, what about you? जब आप on paper पढ़ा, when you came on shoot, and now the first episode जो preview देखा मीडिया ने, how is your journey has been with this character अब तक? So I think first of all, हम सबको दिल से लेजेंडरी सुनील शेट्टी, हमारे प्यारे अन्ना को वर्ल्ड ऑफ OTT में वेलकम करना चाहिए. और एंट्री मारी तो बॉस, कैसी एंट्री मारी तलाइवन, अमेजिंग. I think it all begins from Mr. Gautam, तलवार, जो तलवार की तरह तेज है और गुलाटी नहीं मारते. जैसे गुलाटी बोला तलवार निकाल दिया था उन्होंने. मैं बोला डजंट मैटर, थलाइवा ऐसे रख लो यार, अपने पास रख लो. जाने दे, बच्चा है छोड़ दे. It all stems from an intent यार. मैं बहुत कम काम करता हूँ, ज़्यादा काम करता नहीं हूँ. After the success of Inside Edge 1, 2, 3, every time I would go out to promote it, people would say यार अब जब Inside Edge इतनी अच्छी चल गई है, why aren't you doing something else? Why aren't you doing more work on OTT? And my whole thought process was यार quality करते हैं, quantity के पीछे नहीं भागते हैं. आराम से I have to enjoy it, I have to believe in it, I have to feel committed to it as a character, enjoy the whole experience. I mean, I've had 2 decades of a career now. At some point in life, you realize कि अब unless I feel truly deeply connected and satisfied as a creative person, as an actor, मुझे अब ये नौकरी के लिए नहीं करनी. And I think that's what connected with the way Gautam, Percy, the whole team, when they brought Dharavi to me. And funnily enough, Sarthak and I were at a dinner years before that, a couple of years, 2-3 years before that. And he said, यार मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ. संजय गुप्ता के घर. And he said, मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ. And I said, यार ये बड़ा interesting यार, it's fascinating. And I was thinking of Talaivan as a character, right? Because the way it was. But that's exactly what happened to me. जैसे ही synopsis भेजे तो मैं बोला प्ले क्या कर रहा हूँ, पुलिस वाला नहीं बनना है. थलाइवन हो तो बात करते हैं, you know, exactly the same thought. वैसे भी शूट आउट में हम लोगों ने कर लिया, राइट? गुंडा एंड पुलिस वाला नाव भी रिवर्स मार रहे हैं. But then I met Gautam and I realized that exactly what Anna said, कि he's driven by creating that content.
You know, he's saying content, हर पन्ना strong होना चाहिए, हर किरदार strong होना चाहिए. And it just clicked. And then I met this madman, Samit Kakkad. जो इतना फितूरी है, इतना पागल है, and the way he works, the way he just sinks his teeth into the character, सोया हुआ एक्टर भी जाग जाएगा. You know, you feel like अरे यार ये बहुत पागल फितूरी पैशनेट इंसान है, इसके साथ काम करने में बहुत मजा आएगा. And that's what happened, man. I mean, you know, it was crazy. It was like I was calling Samit more than I would call my wife. I was like, yeah, come, have lunch with me, have dinner with me, let's talk about it. It was an amazing experience getting into the whole story. And even during shooting, I mean, Dharavi in itself was a whole crazy experience. And on the first day only, you could tell the difference between Samit, and due respect to all. But ये वो director नहीं है जो air conditioned कमरे में बैठकर सोचेगा, I think guys, you know, we need to visualize Dharavi like this, जो आजकल ज़्यादा Hollywood effect हमारे सर पर चल रहा है हिंदुस्तान में भी. गली गलत चप्पा चप्पा जाके एक एक गली को जान के पहचान के रेकी मतलब कितने 50 रेकी किए कि यहाँ ये शॉट होगा, यहाँ ये करेंगे, इस तरह से ये क्रिएट होगा, तलाइवन की दुनिया ऐसे होगी, जयंत गावस्कर यहाँ से आएगा. इसीलिए हर फ्रेम में you can feel Dharavi, you can smell Dharavi, you can experience. It's an immersive experience of Dharavi, and I feel you've never seen Dharavi like this before. And I personally feel, because Anna is a legend in his own right with a phenomenal career over 3 decades, but I personally feel that this is his career's best performance, and this is coming from a fan, right? I've been a fan of his. No, but once again, I have to add, everything is the director out here and the man who believed in it. Yeah. The writers. It's the technical team. Samit is crazy. I can talk forever about Samit, which I will. Good things and only good things. I absolutely love this man and the passion that he has, and he drives you. So what Vivek said is absolutely true. I think it was because he was crazy is that he put a bunch together that's absolutely crazy. मेरे को तो डर लगता था, हर एक के साथ, अपनी फैमिली के साथ काम करता था, मैं बोलता यार मैं डायलॉग तो नहीं भूल जाऊं, ये खा तो नहीं जाएगा मेरे को, you know, because you're such good actors, you know. And sometimes I used to forget, I used to just look at them like that, but then sometimes it worked that Thalai was in his own world, so it looks like I'm acting but I'm in awe of them, you know. अन्ना ने मुझे एक बार बोला था कि समित यार तू सब ना इतने धाकड़ एक्टर्स जो लेके आया ना वो बहुत अच्छी बात है. So I think एक मोतियों को साथ में पिरोना भी एक आर्ट है, and I think Samit is very committed to that. And every single actor, I'm so grateful to the whole cast. You know, किसी के 5 सीन है तो किसी के 50, but उन 5 में भी इतने जान डाल दिया हर एक्टर ने, आप किसी का परफॉर्मेंस देख के नहीं बोल सकते ये वीक है. And like Anna said, every performance, every scene, you have to be on the tip of your toes. Because सामने solid actor है, तो आप भी और अपना game up करते हो. That experience was amazing. Even shooting in Dharavi, I remember, एक action sequence था. वहाँ सब शुरू हो गए. Funnily enough, you know, flashback to shoot out, they started shouting, Maya bhai, Maya bhai, Maya bhai, and पूरी गर्दी हो गई. और इतने सारे हमारे सफारी सूट पहन के हट्टे कट्टे सिक्योरिटी गार्ड्स रोक नहीं पा रहे थे. People were just coming in the frame randomly. And then Samit goes and talks to this Mai, this old woman. You remember that? She lived in a kholi right there, and he said, in Marathi, he went and told her कि थोड़ी मदद कर दो, यहाँ पे ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, shoot नहीं हो पा रही. She must be at least 70 years old. She went inside the house, pulled out one danda, and came out, and the choicest of Marathi galis. Ah. और डंडा घुमाते घुमाते जो गालियां दी, लोग 5 सेकंड में डिस्पर्स हुए जैसे राइट पुलिस आई हो. That was that world. It was amazing. I had such an incredible experience there. एक जहां हम शूट कर रहे थे, क्योंकि कोई वैनिटी वैन वगैरह कुछ नहीं, अंदर भी जाना है तो या तो चल के जाना है या बाइक पे बैठ के जाना है शूट करने के लिए, कुछ गलियां इतनी सक्रिय है. But I observed something, and Anna, please correct me if I'm wrong. I observed that गलियां जितनी गंदी हैं उतने ही उनके घर और दिल साफ हैं और सुंदर हैं. And because we had no place to sit, वो घर बुला लेते हमको. I used to go and rest in between shots. I used to sit, जमीन पे बैठ जाता था, ठंडी है, ऊपर पंखा लगा देते, spick and span, clean and beautiful. खाना बनाते थे तो बोलते थे आप हमारे घर का कुछ खाएंगे, खाना खाएंगे. And I remember when we were leaving,
The last day of wrap up, I went to see this lovely family that was very nice to me there, and they were from the Kumbhar community, the potters. And उन्होंने हाथ में थैला पकड़ा दिया. मैंने कहा ये क्या है? And said नहीं दिवाली आ रही है ना. So they gave me diyas, which they had made. And I said, obviously जो हम सोचते हैं ना कि एक transactional nature होता है, maybe I should pay for something like this, right? आपका job है ये. And she said absolutely not. She said बिल्कुल नहीं. आप माँ बोलते हो मैं बेटे की तरह आपको दे रही हूँ, ये आपके घर में रोशनी करेगी, ये दिवाली, ये मेरी तरफ से आपको. How sweet. And it was such an amazing experience, yaar, to feel that love. And I realized that where we live, ना, हमारे घर बड़े हैं, लेकिन जैसे घर बड़े हो जाते हैं ना, तो दिल छोटे होते रहते हैं. And Dharavi taught me the opposite. छोटे घर हैं, लेकिन दिल बहुत बड़े हैं. It was an amazing experience to go through that. It's super fun working, on the show. Jayan Gavaskar is a crazy cop, and people say ये जो पागलपन जो है ये कहाँ से आता है? Said Samit Kakkad से आता है. बस उतना ही पागल वो है. First day I work with this brilliant actor who I'm such a fan of her work. I've always admired her work, not only in Hindi but Marathi also. First day, first shoot, first time I'm shooting with Sonali, and guess what? Am I allowed to say it? Am I allowed to say it? It's a bloody intimate, passionate scene. And I'm like, yaar, ye kya hai yaar? First time I'm working with her. So this is the kind of madness. And Sonali and I had a big laugh. And then we said, chalo, let's just get on with it now. So it was an amazing experience. And thank you so much to the whole team. Thank you to Percy, who personally took on being my Santa Claus, landing on set with Royce Chocolates to make sure that the 10 kgs I was trying to put on was putting on much faster than I expected. Thank you to Sarthak for this world that he created. Vijay, you're an artist, man. You're an incredible artist. And all of you, yeah, the whole team, you know I love you guys. I just enjoyed every minute of working with all of you. Thank you so much for making me a part of this incredible, crazy journey. Thank you, sir. And Sonali ji, how was it to be the powerful person, CM Saiba? A big thank you to Samit because मुझे नहीं लगता और किसी ने सोचा होता. मुझे लगता है कोई भी एक्ट्रेस जो आज इंडिया में है, she would have said कि मुझे कास्ट करो. This was such a powerful role. किसी भी एक्ट्रेस को लगता कि I want to be in the shoes of the CM. मुझे अभी भी याद है लास्ट ईयर हम मिले थे समित जब हम तैयारी कर रहे थे. And as you exactly said, we met in this very hotel when we started preparing for my character Janvi Surve in Dharavi Bank. I still remember एक exercise मैंने की थी जब मैं कॉलेज में थी. मेरे थिएटर टीचर थे और उन्होंने हमें एक एक्सरसाइज दिया था कि एक गाली दे दो. तो मैं पुणे से हूँ, आई एम फ्रॉम फर्ग्यूसन कॉलेज. तो मेरी पहली गाली थी बावड़ट. तो दुबे जी ने मुझे बोला था बावड़ट गाली नहीं है. कोई भी लड़का जो तुम्हें छेड़ रहा है उसे अगर तुम ऐसा बावड़ट कहोगी तो प्यार से आके हाथ पकड़ेगा. अच्छी गाली दो. तो मुझे याद है मैंने काफी दिन बिताए थे एक गाली सीखने के लिए, लेकिन समित के साथ काम करते वक्त वो जो मैंने एक्सरसाइज किया था उससे कई ज्यादा गालियां मुझे याद करनी पड़ी. क्योंकि कहते हैं ना कि एक्टर्स ऑलवेज डिलीवर लॉट मेनी अनसेड लाइन्स एंड इमोशंस. वी merely don't say the lines that we are delivering. There is a lot going on in our minds and hearts. An actor is supposed to communicate the entire, fight that is going inside. So Samit really charged each one of us to bring out that fight and struggle which is within. I was so scared to touch Janvi Surve because for me, I feel let us have trust. Let us trust all the politicians because they represent us. They are a part of our society, and let us not doubt or create a gap between them and us. They are amongst us and part of us. But having power and being a leader are two different things than being a common man.
It was fun, Samit. It is entirely thanks to you Much fun for me too. casting me as Janvi Surve. Gautam, you have a fabulous team. They looked after us and we felt like a huge family. We felt like a team. I remember working with Sunil sir on a film called डरना मना है, जहाँ पे मैं उन पे इतना भरोसा करती थी कि उनकी वजह से मैं वो फिल्म कंप्लीट कर, मैं बहुत डरती हूँ हॉरर फिल्मों से, मैं देख भी नहीं पाती हूँ. Only because he was there in that film, it was a RGV film if you remember, I could sail through. लेकिन यहाँ उनके साथ पंगा लेने में वो जो बावड़ट वाला था ना मेरे मन में, मतलब धाड़स ही नहीं हो रहा था. लेकिन I had to put my act together. For Vivek, I think एक विवेक मुझे याद है जो जिसे मैं बहुत चाहती थी, वो हमदम सुनियो रे. वो मैंने मोटरसाइकिल राइड देखी है और इतनी बार वो गाना सुना है. और आज हमारे धारावी बैंक का ट्रेलर जो है उसमें ये जो आते हैं गावस्कर बन के, टू कॉन्ट्रास्ट रोल्स एंड fabulous working with Vivek. I have my most of the scenes with Vivek and of course with Nagesh and few of you all from the cast members. But I had a fabulous time being Janvi Surve and bringing out the contradiction which is not necessarily in a CM. I know CM बनने के लिए काफी लोग तैयार हैं, लेकिन मैं बन पाई. Lovely. ये मेरे लिए खास था. और सबसे हॉट सीएम बन पाए. करेक्ट. आप देखिए अभी 10 एपिसोड्स हैं, ढूंढिए. All right, 19th April, MX original series Dharavi Bank. Requesting all the media people, if you have any questions, we'll pass on the अच्छा, mic. सॉरी टू इंटरप्ट यू. जी. आपको पता है सीएम बिजी रहते हैं. जी. मुझे मंत्रालय जाना है, तो मुझे इजाजत दीजिए. Thank you so much. Thank you so much for having me today. Thank you so much, Sonali ji, for being with us today. Ladies and gentlemen, Sonali ma'am के लिए जोरदार तालियां. Thank you. हेलो हेलो हेलो. अन्ना आपकी खूबसूरती का राज क्या है? व्हाइट एंड व्हाइट थलाइवा हर जगह दिख रहा है. हेलो हेलो. Please raise your hand. We'll get the mics to you. सुनील जी आपके ठीक सामने. सुनील जी कहाँ पे आपके सर? ठीक सामने. हाय. Guys, खड़े हो जाइए. sorry, just before the question, I just want to say one thing. I couldn't have explained the how better. This is sheer magic, and thanks Percy, thanks for everything. अन्ना जी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है धारावी बैंक के जरिए आपको. एक बहुत बड़ा नाम भी मिला है थलाइवा. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि थलाइवा का मतलब ही होता है सबको प्यार करने वाला, सबको साथ लेकर चलने वाला, सबका गुरु, सबका भगवान. तो ये जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है आपको, थलाइवा ये नाम मिला है आपको, कैसे देखते हैं आप एंड कितना प्रेशर होता है आपके ऊपर इस थलाइवा इस अन्ना रियल लाइफ में भी तो ऐसे ही हैं. हाँ जी. नहीं, बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था. लेकिन जैसे हमने सब ने कहा, आप स्टेज पे अगर सुने होंगे, सभी ने एक ही कहा कि टीम इतनी अच्छी थी. और जब टीम अच्छी होती है बहुत आसान हो जाता है. राइटिंग इतनी खूबसूरत, डायरेक्टर इतना अच्छा, सिनेमाटोग्राफर, आर्ट डायरेक्शन, ये सब वो खूबियाँ ऐड करती है. और उसके बाद में जो को आर्टिस्ट आपके हैं, तो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब चार खंबे बहुत ही पावरफुल होते हैं तो आसान हो जाता है. तो आई थिंक इट वॉज कंपैरेटिवली easier for me if I was
if I wasn't in a unit like this, ऐसी यूनिट न मिलती तो शायद मुझे बहुत टेंशन होता. लेकिन बाकी जो था फिजिकलिटीज थी 3 घंटे 4 घंटे मेकअप का, वो सब तो हम वैसे भी झेल ही लेते हैं. लेकिन आई थिंक क्योंकि टीम बहुत अच्छी थी, मैं कहूँगा कि कंपैरेटिवली इजी. लेकिन साथ साथ मेहनत बहुत रही, खास करके डिक्शन, बॉडी लैंग्वेज पर ये देखना, क्योंकि मेरे हीरोज भी ऐसे हैं जिनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ऐसे स्टॉलवर्ड एक्टर्स है कि मुझे हमेशा ये दिमाग के पीछे रहता था कि यार कहीं गड़बड़ ना कर दूं, कहीं मजाक ना बन जाऊं. और मेरी पहली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वैसे ही मैंने कहा कि OTT की पहली, इसके पहले मैंने काम किया है, लेकिन साउथ में मैंने कुछ फिल्में की जो टेस्टिंग ऑफ वाटर्स थी मेरे लिए. आप ऐसे टेक्निकली देखा जाएगा तो 7-8 साल के बाद मैं कुछ ढंग का काम कर रहा हूँ. मैं खुद कहता हूँ कि ढंग का काम कर रहा हूँ, क्योंकि ढंग का काम आया ही नहीं मेरे पास. ढंग का काम कर रहा हूँ, और जब वैसा काम आता है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी, कि मैंने अपने ऑडियंस को चीट किया था इसके पहले. ऑडियंस थी मेरी, मुझे प्यार आज भी उतना ही है. इंटीरियर्स में कहीं भी जाऊं तो बहुत ज़्यादा प्यार है. लेकिन क्या वो टिकट्स में कन्वर्ट करते हैं? नहीं, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं गलतियां की थी. अब अगर मुझे उन गलतियों को सुधारना है, एंड आई हैव टू कीप देम हैप्पी, आई हैव टू डिलीवर समथिंग ऑफ क्वालिटी. एंड आई थिंक ये 4, 5, 7, 8 साल मुझे वो मौका मिला, पिताजी के साथ जो 4 साल मैंने गुजारे, मेरे बच्चों के साथ जो मैंने पैंडेमिक के साथ अपनी फैमिली के साथ, कि पीछे हट के देखा मैंने कि क्या है, क्या चल रहा है, क्या अच्छा है, क्या खराब है हमारी अपनी इंडस्ट्री में. So I think I went back to the drawing table and learned, and I was blessed that I got to work with a team like MX, a director like Sumit, the rest of the star cast. I mean, Vivek, every shot that he comes in adds so much value to Thalaiva, the family. मैं बार बार यही कहूँगा, और अगर इंडिविजुअल इंटरव्यूज भी रहेंगे तो यही लगेगा कि ये एक ब्रोकन रिकॉर्ड है, लेकिन सच्चाई यही है कि इनकी वजह से Thalaiva का कैरेक्टर बनता है, and I'm blessed to get such a phenomenal opportunity, reach. मैं हूँ ही मास हीरो, अगर टिका भी हूँ तो मास के वजह से टिका हूँ. और ऐसी एक मास फिल्म सब्जेक्ट जब आती है तो it means a lot. And जैसे कि हम सब कहते हैं, content is king. Finally सिर्फ और सिर्फ content and right pricing चलेगा, and that is what our industry also has to realize कि यंग टैलेंट पे यहाँ एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी, जो टैलेंट है इसमें बहुत ही यंग टैलेंट है. और जब आप यंग टैलेंट में इन्वेस्ट करते हो, आप कभी गलत नहीं हो सकते. अगर गलतियां हो भी गई तो बहुत बड़ी गलती नहीं होगी, डिजास्टर नहीं होगा. आप दोबारा ऐसा नहीं होगा कि आप दोबारा खड़े नहीं रह पाओगे, आप लड़खड़ाओगे लेकिन खड़े रहोगे. एंड आई थिंक दिस इज द डिफरेंस. जो कमिटमेंट थी इनकी. आप सेट पे धारावी का एक सेट भी लगा हुआ था, और अगर आप सेट देखते, मैंने समित और MX से ये भी कहा था कि इसको परमानेंट रख लो यार. आई थिंक द वर्ल्ड विल वांट टू कम एंड सी व्हाट धारावी इज इफ दे डिडंट गेट अ चांस टू गो टू धारावी. And the way they matched it, this is the commitment of Samit and his entire team. Every assistant is a genius, बहुत सारी चीजें उन्होंने की भी, बाद में बताऊंगा, लेकिन वर्क वाइज दे एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. दे वर्क हार्ड and they play harder. समित के साथ मेरा एक कंप्लेन है, मैं अभी बता रहा था विवेक को और पर्सी के साथ, कि पर्सी ने मुझे चॉकलेट नहीं दिए और समित ने मुझे इंटीमेट सीन दिया ही नहीं. Thalaiva अकेला बूढ़ा, लाचार नहीं था, फैमिली थी, नो रोमांस, नो गाना, बेचारा लुंगी पहना है फिर भी कोई इंटीमेट सीन. एब्सोल्यूट. Hello, Sunil and Vivek. My question is to you. You're right. Yeah, hi, Shama Bhagat here. Okay, a lot of films and series, are based on crime, and there's a lot of glorification of crime, and they're having the highest TRPs. So, what do you think attracts people towards such series or films that glorifies crime? It's not about glorifying crime. It's about the kind of layering that happens, black and white and gray. You like to see all these colors. They blend very, very, very beautifully. And there are stories to tell. And it's not about one individual, Like Dharavi is not about one individual. It's about the family. You've seen Narcos, you love it.
You love it because yes, it's intense. You want to understand ये दुनिया कैसी दुनिया है. लेकिन मेरा मानना है कि आज अगर आप धारावी देखो तो थलाइवा वो एक आदमी है जो 15-20 साल से धारावी के बीच, बंबई के बीचों बीच रहा है, और पुलिस और फोर्सेस उन तक नहीं पहुंच पाई. ये सच्चाई है. वैसा ही आप देखोगे तो पुलिस उनके प्रॉब्लम्स. सो जब आप इन सब को एक साथ पीड़ते हो एंड यू लेयर इट ब्यूटिफुली, यू गेट टू सी अ लॉट मोर. देयर इज अ लॉट मोर इंटेंसिटी, देयर इज अ लॉट मोर scope for performances. I think that's what excites people, and that's what looks good, because that's a lot of people don't belong to that world and they want to know more about that world, and probably that's why it's interesting. Shamaji, how are you? Very well, thank you. So I think, aside from what Anna said, I feel that in the narrative of Dharavi Bank, what has been very well achieved is कि एक तरफ जो सिनेमा है, it imitates life. तो ऐसे लोग रहे हैं, ऐसे कैरेक्टर्स रहे हैं, तलाइवन जैसे ऐसी सिचुएशंस रही हैं, ऐसे गढ़ बने हैं. That has been represented. But why do you see only glorification of crime? You should also see the glorification of the Mumbai police force. You should see Jayant Gavaskar representing that man, determined man in uniform, willing to go to any length, give up anything for sacrificing anything to achieve his justice, right? To achieve that end goal of justice. So I think there's a balance in the narrative. I think there's a balance. There's one larger than life character, and then there's one guy in a uniform who has just made up his mind. And this is something that we've seen in real life also. We've seen this happen in real life time and time again. So I think Dharavi Bank, unlike the glorification of crime story, is a very interesting, very realistic and balanced storytelling. Hi, this is Komal Panchal from Indian Express. I have a follow-up question for what Shamaji asked. It's for Sunil sir and Vivek, both of you. While, of course, I saw the first episode. And this is a kind of a trend where, with a lot of OTT, there is this glorification of violence. I'm not only calling it crime. And the first episode opens with someone chopping a human body. So, it's kind of, it does impact society in a very big way. So I want to understand from both of you how you look at glorification of violence on OTT content. I think we both answered the same question. Somewhere down the line, it's not about glorification, like Vivek said. In the first question, the answer was very generic. But if you talk about Dharavi, you'll see the entire reasoning. You'll see what the Mumbai police wants to achieve. You'll see how Thalaiva himself, for him, his family, his people, mean a hell of a lot to him. Probably what he's gone through in his life is something that he looks at it from that point of view. So there's definitely no glorification. There is definitely a balance in everything that has been shown. And somewhere down the line, like Vivek said, it's real life too. And there's a lot of that is being shown. No, I mean, I'd like to answer it in this way, that you're from the news media. We've seen time and time again all over the world that there are people who became killers and serial killers, or, did really violent things just so that they could be carried by the news media. Would you categorize that as glorification of violence? So it's just a representative of a representation in terms of what society actually is. And you're doing your job as the media to put that across, right? You're reporting it. Same way, we're trying to bring a mirror to society on screen. Is there no violence in our society? There is, right? So I think you can't sanitize cinema for saying that, oh no, there should be a moral code. I think if the moral code starts, then it has to be applied even to media. Then you can't show any crimes on TV. Why are you reporting it? Why is the headlines not a retired army officer donating his entire pension for educating kids? But the headlines
are about a man chopping, his live-in partner into pieces. Why is that? So it's the same reason. No, and I guess you have to see the entire 10 episodes to decide whether it's glorifying it or not. I think that's what needs to be seen. You've just seen the first episode, and you put this question forward, which is very, very good. But I think you need to see the entire series to really understand what this world is all about, whether it's the police or Thalaiva's family. Hi, this is Nisha from bestmediainfo.com. My question is for Mr. Gautam. There have been, crime-based shows made before. So, and they have been successful. So, do you think this genre is an audience favorite when it comes to the OTT space, especially? Yeah, to be honest with you, if you understand, there are three ecosystems. Yeah, small little advertising, 30 seconds, thousands of episodes on television, cinema, and then there is OTT. The reason why crime is so big, right, is that none of the other mediums of entertainment, including short video format, gives that need state. Audience has got a need state of escapism, right? Most of the audiences don't live in Dharavi. Most of the audiences have never experienced Dharavi. Most of the audiences across India will have they don't have a point of view on Dharavi yet. But post watching this show, I'm sure they'll have a point of view. They'll have a understanding. And by the way, OTT platform, it's not about glorification at all. I just want to add to it. It's more representation, right? We don't sit down in a room and say, okay, let's do this or let's do that. Does it represent the story? Does it represent it? Does it move it forward, right? Does it create scare for a very serious person or a character like Thalaivan? And only then do we actually land up doing something around it, right? But yes, if you ask me if the question being for crime, yeah, the need state exists with the audience massively. The need state is not satisfied by any other medium, which is why most OTTs are slightly over-indexed on crime. That's true. Hello, Anna, this side. Idhar. Your left. मैं कंफ्यूज होता है आपका लेफ्ट या मेरा लेफ्ट जी अन्ना जो पहला शो देखा बहुत ही शानदार है थलाइवा का रोल है आपका लेकिन दूसरी तरफ 323 के लिए मेहुल चौकसी ने आपको नोटिस भेज दिया क्योंकि वो फिल्म जो फाइनेंशियल फ्रॉड करके बाहर भाग गए हैं विदेश में क्या कहेंगे आप मेहुल चौकसी की तरफ यस नोटिस आया है बोले दीजिए अभी ये नोटिस उन्होंने मुझे भेजा है नोटिस उन्होंने मेरे प्रोड्यूसर्स को भेजा है आई थिंक ये सवाल उनसे पूछना बहुत ज़रूरी है कि देश के बाहर वो है हम नहीं है हम तो देश के अंदर ही है तो आई थिंक ये सवाल प्रोड्यूसर ने कल जवाब भी दिया हुआ है कि जो है उसी के बारे में बात करें जो फैक्ट्स है जो फिगर्स है जो कहानी है पब्लिक डोमेन से लिया गया है सो आई थिंक इट्स एन इनवैलिड केस एनीवेज रिक्वेस्टिंग एवरीबॉडी शो रिलेटेड सवाल पूछिए बेटर रहेगा थैंक यू मेरा सवाल आपसे और was not working at that point in time. Anna, good to see you. Vivek, good to see you. बहुत अमेजिंग लगा यार शो इट इज़ वेरी अपीलिंग यू नो मैं आप दोनों से एक सवाल है मेरा विवेक से जब मैं विवेक की बात करता हूँ तो चंदू से लेकर माया डोलस तक सब जहन में आ जाता है आई रेड इन द मॉर्निंग वजन भी बहुत बढ़ाया आपने इस किरदार के लिए विवेक क्या चैलेंजिंग था आपके लिए व्हेन प्लेइंग कॉप इन द फिल्म और एक जहन में एक इमेज रहती है जब मैं विवेक की बात करता हूँ माया चंदू और अन्ना आपसे सवाल जानना चाहूँगा कि धारावी की जब मैं बात करता हूँ या इस जंगा के इर्द गिर्द जितनी फिल्में हमने देखी हैं आपने जिक्र किया कमल हसन साहब का आपने जिक्र किया विनोद खन्ना साहब का एक स्टोरी हम ऑलरेडी देख चुके हैं इंडियन ऑडियंस देख चुकी है बहुत बड़े नंबर पे चाहे मैं दयावान की बात करूं मैं वैल्यू नायकन की बात करूं धारावी बैंक के माध्यम से किस तरह से वो ये कहानी उन कहानियों से अलग होगी जो ऑडियंस को बिल्कुल नया लगेगा ये समझने की कोशिश करना चाह रहा हूँ आपसे आई थिंक ये जवाब समित को देना चाहिए समित आई थिंक ये बेस्ट आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं उसके बाद हम बोलेंगे हाय मेरे को लगता है बहुत ही अलग है बहुत डिफरेंट है बिकॉज यस आपने जो बात की हमने नायकन देखा है
हमने कमल हसन सर की भी देखी है नायकन, एंड हमने विनोद खन्ना सर की भी देखी है, बट ये बिल्कुल ही अलग स्टोरी थी वो, ये बिल्कुल ही अलग स्टोरी है वो। आज का जो धारावी है वो बहुत अलग है, तब का बहुत अलग था। एंड आपको आज का धारावी, आज के लोग, आज के जो किरदार हैं वो आपको इस शो में देखने मिलेंगे। इसमें लेयरिंग बहुत अलग तरीके से की गई है सार्थक ने, बहुत ही डिटेल्ड लेयरिंग है जो बहुत सारी है, बहुत सारे किरदार हैं, बहुत सारे लोग हैं। एंड फैमिली जो हम बात कर रहे हैं कि फॉर फैमिली, फॉर पावर, फॉर ऑनर, फॉर ड्यूटी, एंड इट इज़ एन आउट डिफरेंट शो। सो आप अगर सेकेंड एपिसोड भी देखेंगे तो आपको इमीडिएटली आई थिंक सो एक अंदाज़ा आ जाएगा कि बहुत ही अलग है। थैंक यू। क्योंकि दुनिया ही अलग है। अब अगर यहाँ देखेंगे थलाइवा, मैंने नायकन और ये कहा क्योंकि वो जो कैरेक्टर्स थे, जिस तरीके से उन्होंने प्ले किया था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत ही अलग कहानी है। और एंड इट्स द फैमिली, इट्स नॉट थलाइवा की कहानी नहीं है ये, धारावी सिर्फ धारावी की कहानी नहीं है, ये गावस्कर की कहानी है, ये थलाइवा की कहानी है, ये हमारी सीएम की कहानी है, और उनके इंडिविजुअल थॉट्स और उनकी इंडिविजुअल जर्नी और उनकी ज़िंदगी में क्या होता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जिस तरीके से इस कहानी को लेयर किया गया, जिस तरीके से इस कहानी को प्रेजेंट की गई है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज देयर इज़ अ ड्रामा. Every character moves the story forward. Every character is as important to the film as probably the most important characters in the show itself. तो एक अलग दुनिया, और एक दुनिया जो लोग देखना चाहते हैं, एक दुनिया जिसमें समित और पूरी टीम घुसी हुई थी और उनके बीचों बीच शूट हुई है। तो विजुअली भी बहुत ही पावरफुल, विजुअली भी एक स्टनिंग फिल्म है, क्योंकि धारावी इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन दिस फिल्म, और जो कुछ धारावी में होता है। तो आई थिंक दैट इज द डिफरेंस बिटवीन जो आपने देखा और जो अब आप देखने जाओगे। आई एम श्योर इट विल, बिकॉज यू टॉक थलाइवा, लेकिन कंपैरिजन में क्या होगा। मैं खुद बोलता हूँ कि 10% भी अगर मैं काम कर पाऊँ तो ठीक है, तो कंपेयर अगर कर भी लेंगे तो बोलेंगे यार दे वर मच बेटर, एंड दे आर, क्योंकि मैं खुद भी कहता हूँ कि बट आई हैव डन माय बेस्ट एंड आई हैव डन द बेस्ट आई कुड टू जस्टिफाई द अपॉर्चुनिटी दैट आई हैव गॉट, सो दे आर माय हीरोज, आई एम फाइन विद इट. हेलो अन्ना, दिस इज रवि जैन फ्रॉम एबीपी न्यूज़. हाय अन्ना सर, आपका जो किरदार है बहुत ही अलग नज़र आ रहा है. ओटीटी स्पेस में स्वागत है आपका. बहुत समय बाद आपका एक अलग किरदार देखने को मिलेगा, लेकिन मेरा सवाल इससे थोड़ा हटके था. अभी जो खबर आई है, आपका किरदार बहुत आइकॉनिक था हेरा फेरी में, राजू और घनश्याम की जो जोड़ी थी, लेकिन अब खबर आई है कि अक्षय कुमार उसमें नहीं है और आप डिसअपॉइंटेड हैं. कुछ बताएंगे इसके बारे में, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं धारावी में इतना बिजी रहा हूँ कि क्या हेरा फेरी हुई है, हेरा फेरी में मुझे पता ही नहीं. तो ये हेरा फेरी जानने के लिए मुझे दोबारा हेरा फेरी के प्रोड्यूसर के बाद जाना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि अक्षय और आपके बीच में क्या हेरा फेरी हुई. तो ये हेरा फेरी के चक्कर में नहीं, पता नहीं, मुझे जेन्युइनली नहीं पता. और 20 तारीख के बाद जाऊंगा, बैठूंगा और समझूंगा और जानूंगा कि क्या हेरा फेरी हुई है. तो आप चाहेंगे कि ओरिजिनल कास्ट ही हो इस फिल्म में? जैसे मैं चाहूंगा कि हेरा फेरी नहीं हो, लेकिन हेरा फेरी बने जरूर. थैंक यू. हाय एवरीवन. हाय. क्या कमाल के शब्दों Hi, की हेरा everyone. फेरी हुई है. शादमा दिस साइड फ्रॉम होम बॉलीवुड. सुनील सर, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि थलाइवा की जब हम बात करते हैं तो एक नाम जो हमारे जहन में आता है वो है रजनीकांत सर का. उनको शाहरुख ने भी ग्लोरीफाई किया है एज थलाइवा. अब जब आप इस फिल्म में थलाइवा का किरदार निभा रहे हैं तो आपको भी एज अ थलाइवा हम जानेंगे. आई जस्ट वॉन्ट टू नो अबाउट योर इक्वेशन विद द ओरिजिनल थलाइवा, एंड क्या आप ये थलाइवा उस थलाइवा के साथ काम करना चाहेंगे इन फ्यूचर? जी सॉरी, द लास्ट बिट.
I'm sorry. So, अभी हम आपको भी थलाइवा के एज अ थलाइवा जाना जाएगा. So I want to know about the equation with रजनीकांत सर, एंड क्या हम ये दोनों थलाइवा को एक साथ ऑन स्क्रीन देख पाएंगे कभी? मेरी जिंदगी की ये एक there was only one wish that I had, that if there's one person I want to work with before the end of my career, it was Thalaivan, that is Rajni sir. और रजनी सर के साथ मैं काम कर चुका हूँ. दोबारा मौका मिलेगा तो कभी ना नहीं कहूँगा, लेकिन वो ओरिजिनल थलाइवन है. ये फ्रॉम अ वेब सीरीज पर्सपेक्टिव OTT के पॉइंट ऑफ व्यू के थलाइवा है. बिकॉज आई थिंक लोग आज भी अन्ना ही बुलाते हैं मुझे, और मैं खुश हूँ अन्ना, क्योंकि अन्ना के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, बड़े भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. यहाँ तो जगत के वो थलाइवा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन थलाइवा वो ही रहेंगे. एंड दैट्स व्हाट आई वुड विश. मेरा सवाल मेरा सवाल समित जी से है. समित जी, मैं पूछना चाहूँगी, भावना शर्मा. नमस्कार. हाँ जी, नमस्कार. मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि राकेश मारिया कहा था हमें कि जो साउथ का, खासतौर पे जो तमिल कम्युनिटी है, उनका क्राइम और जो पुलिस का बहुत गहरा संबंध रहा है, और हमने 60 और 70 के दशक में देखा भी है. वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई में भी उसको दिखाया गया है. लेकिन उसमें एक चीज़ थी कि उसमें एक समानांतर सरकार थी. ये राकेश मारिया ने कहा था. शायद उनका इशारा इनकी तरफ था, शिवसेना की तरफ था. तो क्या इसमें भी हम आगे कुछ देखेंगे कि एक समानांतर सरकार है जो साउथ इंडियंस का विरोध करती है, जैसे कि उसमें शुरुआत में किया गया था? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं देखेंगे. ओके. दूसरा सवाल मेरा ये है कि hello, Samit. Hi, Samit. My question is to you here. Hi. Yeah, Samit, it's good to hear that every person from like Anna, Vivek, and complimenting you for your direction, and the way you have handled the team. Just want to know this Dharavi Bank, because you have already told that your base was Dharavi, already done. Is there any something like inspirational story you have come out with, or something would like to, because Dharavi में बहुत से बन सकती है, बट ये पर्टिकुलर जो धारावी बैंक जो आपने लिया है, इज एनीथिंग समथिंग रिलेटेड और इंस्पिरेशनल और समथिंग दैट वे? सार्थक ने जो लिखी हुई स्टोरी है, यस इट इज़ फिक्शन, लेकिन शूट करते समय काफ़ी कुछ किरदार हैं जो आई हैव टेकन फ्रॉम रियल लाइफ, जो उनको कि ये इस तरफ से अगर तुम करोगे तो शायद वर्क होगा. जैसे व्हेन वी वर टॉकिंग विद विवेक सर, जब बात कर रहे थे तो हम लोग ने ना 2-3 जैसे विश्वास नागरे पाटिल सर हैं कि उनका जो एक लुक है, उनका जो एक पहनावा है, उनका जो एक स्टाइल है, एंड दैट इज़ व्हाट वी स्पोक अबाउट व्हेन आई वाज टॉकिंग विद मिस्टर सुनील शेट्टी सर. सो वी डिड स्पीक अबाउट मेनी डिफरेंट पीपल फ्रॉम द रियल वर्ल्ड. जैसे अन्ना के पास इतनी सारी स्टोरीज हैं, मेरे पास इतनी सारी स्टोरीज है, बिकॉज मेरे बहुत सारे दोस्त हैं धारावी में जो आज भी हैं, उनके साथ मैं आज भी उनके घर पे जाके त्यौहार सेलिब्रेट करता हूँ विद माई मदर, विद माई फादर, विद माई ब्रदर, एंड वी ऑल गो टू द हाउसेज. सो वी नो सम पीपल हु आर वेरी इंटरेस्टिंग पीपल, बिकॉज उनका भी एक ह्यूमन साइड है. मैं नाम नहीं ले पाऊंगा शायद, लेकिन येस कभी पर्सनल में नाम ले सकता हूँ मैं, अभी नहीं ले पाऊंगा. लेकिन येस वी हैव टेकन दो स्मॉल नुआंसेस फ्रॉम दोज पीपल, एंड जैसे संतोष ने कुछ नुआंसेस यूज़ किए हैं, नागेश दादा ने किए हैं, वाडकर काका ने किए हैं, शांति मैम से हम लोग ने बात की थी, कुछ नुआंसेस हम लोग ने रियल लोगों के लिए हुए हैं. And I think so that also works and enhances the performance to a different level, because when we see their videos, when we see their pictures, जैसे किंजल जो कॉस्ट्यूम जिसने किया है, हम लोग ने डिस्कस किया था कि ये जो लेडी है ये ऐसे कपड़े पहनती है, ये जो जेंटलमैन है वो ऐसे कपड़े पहनता है, and we went through that. When I was talking to Kunal Shah, the casting guy, जिसने कास्टिंग की है पूरी ये शो की, and I used to send him pictures, he used to send me pictures of real people, एंड उसको जोड़ते हुए दैट इज हाउ दिस शोज.
Hi. The last question, Mayur here yes. from Center. I have one question for Mr. Sunil Shetty, one for Mr. Vivek Oberoi, one for Mr. Samit. I hope I'm allowed to ask all three questions. I'll just keep it short. Mr. Shetty, it's we saw the first episode. It's quite intriguing. बस मेरा एक simple सा सवाल है. At the end of this journey or at the end of this 10 episodes, is this Thalaivan? How do you perceive like him to be perceived as any hero, or is he one to be feared? I believe he believes he's the Messiah when it comes to Dharavi. He's the Robin Hood. Probably he's been wronged, and he seeks, that at the end of it, he seeks that love and affection from his people, and to get the people to believe that he's on the right path, knowing very well that what he is controlling is something that controls the entire city. So it's difficult for me to even tell you, because then there's a lot of revealing that will without happen. revealing that, and I don't want to get into that, because there are issues between Gavaskar and me, and what those issues are the issues that I think you will have to watch. What can he and be close- idolized? Can the character be idolized? Yes, from the gray and the black side of it, but no from the white side of it. It depends on how you see it. I mean, it depends, on how you see it. Honestly, it's a good question, but I can't answer it. Vivek, for you, personally, how pleased are you to be playing a cop, and that's not your conventional Bollywood cop who is usually required to look sexy, sport a six-pack? Because here you look like... You look sexy. Sexy is not about six packs. Yeah, that's sexy. Sexy is having the right attitude. Sexy is not there. You can't describe sexy in any particular way. Every individual who's an actor has sex appeal. Okay, and yeah, that's Vivek, why but- he's loved and I wouldn't say worshipped, but admired also. So sexy is the wrong word to use. Yeah, Vivek, but Vivek can is you... sexy. Can you... Thank you, Anna. To be playing this or should I say, a rather, non-deglam, I would say. Yes, I think I understand your question. Yes. Samit is somebody who's always chased authenticity. I think Sarthak brought the authenticity on paper, and Samit wanted to enhance that on screen. And throughout our conversations, and Gautam was also a part of it, saying, no, we want him to look real. We want him to look a certain age. We want him to look like he's a JCP of that age. We want him to dress like that. And we want him to come across not somebody who spends 4 hours in the gym, but somebody who spends 16 hours in the office doing a job, which is the average time that, police personnel spend actually on the job. They don't have a 8 ghante ka 12 ghante ka duty. Their duty has no time end, right? So that authenticity came in. But what I thought was most challenging about Gavaskar, to me, was Gavaskar doesn't verbalize much. It's not about the dialogue. It's not about what he's saying, because he could be saying one thing, thinking another. And for that, we had to work as a team between Samit, myself, Vijay, all of us, in terms of how do we put that across on screen? Because you have to know as an audience, ye kuch soch raha hai, ye kuch karne wala hai abhi. But you can't know ye kya karne wala hai. And that's the game, right? It's a constant chess game. Without verbalizing, without saying dialogues. And then there's a layer of vulnerability. Because for characters like this, that strength, that mad passion to deliver justice, no matter what the cost, no matter what the rules, he'll break them all. That comes from a sense of deep pain. Deep pain and integrity combined, I think, is what creates this fire that is Gavaskar. So thank you. So just last question for Mr. Samit. Sir, obviously, I think one of the strongest point जो मुझे episode का लगा है वो इसकी visual storytelling, especially the cinematography और the production design, the introduction scene of Mr. Sunil Shetty. और जो हमेशा जो with ऐसे subjects के लिए जो मेरे लिए एक eye catching image रहती है कि इस तरफ एक धारावी है और इस तरफ एक बाजू में एक sky rise है
ऑब्वियसली एक ही शहर एक ही जगह में, बस इट रिप्रेजेंट्स द टू स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी। और कहीं ना कहीं ऑब्वियसली अगर हम बात करते हैं व्यूअरशिप की, चाहे वो बड़ा बड़ा पर्दा हो या फिर इवन छोटे पर्दे पे, तो इन दोनों में ऐसे कंटेंट पे एक पैरिटी व्यूअरशिप लाना, आई थिंक क्या वही सबसे बड़ा चैलेंज रहता है? और इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? चैलेंज नहीं रहता है, लेकिन यस इंटरेस्टिंग रहता है टू गेट दोज गाइज इन, बिकॉज क्योंकि जो बड़े बड़े महलों या बिल्डिंगों में रह रहे हैं वो शायद उनकी तरफ देखते भी नहीं है। नहीं, लेकिन आई थिंक सो दैट इज वेयर आई थोड़ा डिसएग्री विद यू, बिकॉज मुंबई इज अ प्लेस वेयर द रिच एंड द पुअर आर इमीडिएट नेबर्स। आप कोई से भी हाई राइज से बाहर निकलिए और पहला लेफ्ट मारिए तो आपको एक स्लम दिखेगा, एंड दैट इज व्हाट मुंबई इज ऑल अबाउट। एंड मुझे लगता है हाई राइज, मतलब जो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे लोग हैं, मेरी बहुत सारी फैमिली है जो हाई राइज में रहते हैं, बट एंड ऑल्सो जो हमारे लोग हैं मुंबई के, या फॉर दैट मैटर आप दिल्ली ले लो, राजस्थान ले लो, यूपी ले लो, आई थिंक सो अगर एक अच्छा कंटेंट आप उसको देंगे तो वो या तो वो धारावी हो, या फिर वो बॉम्बे का रेस कोर्स हो, या फिर लंदन हो, आई थिंक सो दे विल बी वेरी मच inclined towards watching it. And I think so that is what we have tried to create, because again it is all about content, and content is king. It's all about characters, it's about people. I think so they want to know कि ये ऐसे characters भी हैं, होते थे या है या और रहेंगे, या उन्होंने देखा है, उन्होंने सुना है. So I think so it's a great mix of a class and mass, and I think so everybody would absolutely love the show. Absolutely. Thank you so much, guys. लाइट अभी बराबर किया, पहले एकदम कम कर, पहले एकदम कम कर सर।